रात के अंधेरे में स्कूल में चोरों का तांडव। इस बार चोरों के निशाने पर उद्यन जातीय विद्यालय। लिडू में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व लगातार एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। बीती रात लिडू के उद्यन जातीय विद्यालय में अज्ञात चोरों ने विद्यालय भवन का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया और वहां से 5 सीलिंग फैन तथा कई लाइटें चोरी कर ले गए। चोर केवल सामान चोरी कर ही नहीं रुके, बल्कि विद्यालय की संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया। विद्यालय के अंदर मौजूद बिजली के तार काट दिए गए और कई स्विच तोड़कर नष्ट कर दिए गए। इतना ही नहीं, चोर फैन अपने साथ ले गए, लेकिन फैन के ब्लेड विद्यालय परिसर के अंदर ही फेंक कर चले गए। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही लिडू के शंकरदेव विद्यालय में भी इसी तरह की चोरी की घटना हुई थी। उस मामले में लिडू पुलिस चोर को गिरफ्तार करने में सफल रही थी। हालांकि जातीय विद्यालय में हुई इस नई चोरी की घटना ने पूरे क्षेत्र में एक बार फिर भय और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से नाराज स्थानीय लोगों ने पुलिस से क्षेत्र में कड़ी गश्त और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल लिडू पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और विद्यालय प्रबंधन को उम्मीद है कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनी टाइम्स 24/7। কালি ৰাতি আমাৰ ইয়াত বিদ্যালয় উদয়ন জাতীয় বিদ্যালয়ত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হয়। তাত আমাৰ বহুকেইখন ফেন, 5খন ফেন লগতে লাইট আৰু বিদ্যালয়ৰ যিখিনি বস্তু আছিল বহুতো অনিষ্ট কৰি থৈ গৈছে। এতিয়া তাৰ বাবে আমি এতিয়া এজাহাৰ দিছো। পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক উচিত তদন্ত আমি এতিয়া বিদ্যালয় খুলিবলৈ আহোঁতে যেতিয়া বাইদেউগৰাকী আহিছে খুলিবলৈ, তেখেতে আহি কৈছে যে গোটেই ৰুমবোৰ খোলা আছে। যেতিয়া চাইছোহি ফেন কেইখন একো নাই। ফেন 5খন, লাইট আৰু আপোনাৰ যিখিনি বৰ্ডবোৰ আছিলে ফেনৰ লাইটৰ গোটেইখিনি ভাঙি থৈ গৈছে আৰু তাঁৰ চাৰবোৰ চব ছিঙি মেলি পেলাই থৈ গৈছে। কালি ৰাতি আমাৰ এই উদয়ন জাতীয় বিদ্যালয়ত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হয়। আমি যেতিয়া স্কুললৈ আহিছো তেতিয়া আমি 8:30 বজাত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল বাইদেউ প্ৰথমতে প্ৰিন্সিপাল বাইদেউ নহয়, আমাৰ যি বাইদেউ থাকে তেওঁ প্ৰথমতে গম পাই বাইদেউক খবৰ দিয়া হয়। আমি যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া দেখিছো স্কুলৰ 5খন ফেন ভাঙি লৈ গৈছে আৰু কিছুমান ভাঙি চিঙি শেষ কৰি থৈ গৈছে। গোটেই লাইট বৰ্ড চব ভাঙি মেলি শেষ কৰি থৈ গৈছে। আমি এতিয়া বৰ্তমান পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত কৰিছে, এজাহাৰ দিয়া হৈছে। বস্তুবিলাক আপোনাৰ সৰু ক্লাছৰ পৰা লৈ গৈছে, সৰু ক্লাছত নিছে, 7-8ৰ পৰা লৈ গৈছে। দৰ্জা ভাঙি ফেন লাইট চব নষ্ট কৰি থৈ গৈছে। হয় হয়, যিবিলাক প্ৰতিটো ক্লাছৰে ফেন লৈ গৈছে। তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যে আজি পাঠদান কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, সেইকাৰণে আমি সোনকালে ছুটি দি দিম। অফিচত বৰ্তমান অফিচৰ খুলিব নোৱাৰিলে, এতিয়ালৈকে অফিচৰ একো ক্ষতি হোৱা নাই, কিন্তু ক্লাছৰুম বিলাক চব ক্ষতি কৰি থৈ গৈছে।